Hi everyone, let's solve this question. In the problem it is given that we have a metallic surface. This is the metallic surface, and over the surface a light having the wavelength 4000 angstrom. For example, this is the light having the wavelength 4000 angstrom is striking over this metallic surface. This is the metallic surface. 4000 angstrom is the wavelength of the light that is incident over it. You need to find out the maximum kinetic energy of the electron, and the work function of this वर्क फंक्शन दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन में. हाउ मच? फाई का वैल्यू दिया हुआ है आपको वर्क फंक्शन. इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and the light having the wavelength 4000 angstrom is striking over it. You need to find out the maximum kinetic energy. Ke max क्या होगा? What will it be? You need to calculate this. So just stop this video for 1 minute and try to solve this question. We can also solve like, as we know that whatever is the amount of energy that is incident on a surface, that is E is equal to Sc upon lambda, is goes to where? Either it will increase, कहाँ use होगा ये? It will use in the work function plus provided the maximum kinetic energy, K max. Okay, so K max, if you need to calculate, then how much it will be? K max is equal to Hc upon lambda minus 5. Phi is the work function. Hc value is 12420 electron volt एंगस्ट्रॉम. जो आपका Sc होता है, इसका जो वैल्यू है, हाउ मच, कितना है? 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई हाउ मच एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट, 4000 एंगस्ट्रॉम माइनस हाउ मच वर्क फंक्शन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So how much will it be? कितना आएगा? When you start solving, it will come out to be 0.605 electron volt. So how much will be the maximum kinetic energy? कितना रहेगा maximum kinetic energy? 0.605 electron volt. K max how much? 0.605 electron volt means what? The electrons that is ejecting out from the surface moves with this kinetic energy. जो भी इलेक्ट्रॉन इस सरफेस है, मेटलिक सरफेस है, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, it will move with a maximum kinetic energy of 0.605 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतनी स्पीड से, इतनी काइनेटिक एनर्जी से लेकर हमारा इलेक्ट्रॉन इस मेटलिक सरफेस से पास होगा. वर्क फंक्शन क्या होता है? इसका वर्क फंक्शन कितना था क्वेश्चन में? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मींस इतना आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए. यू रिक्वायर दिस मच मिनिमम एनर्जी टू इमिट, इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए, सरफेस से बाहर निकालने के लिए इतना एनर्जी तो चाहिए. अब आपने सरफेस से, मेटलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट तो कर दिया, निकाल तो दिया, अब उसे काइनेटिक एनर्जी भी देनी पड़ेगी ना. तो वो काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी? 0.605 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट.